Hello, my dear students. Good morning. Today, I'm going to teach you class 7th English Reader, and you can see over here. This is the first chapter of class 7th. This is the first chapter of class 7th. The Emperor's three questions. Two video I have provided you. So very first, I want to tell you that what is the story that is given in this chapter. There is an emperor in this chapter. He has three questions in his mind. How many questions he has in his mind? Three questions he has in his mind. And the questions are very important because they are related to his life, and it was very important to him that he want to know the answers of these questions, but he was unable to find the answers because there were nobody present in his kingdom who can reply for these questions, because once he announced also in his court, in his kingdom, that who will be able to keep the answers of the questions, he will be rewarded by the king. But lots of, you can say, citizens came there, and they lots of person came there, and they tried to answer also, but he was not satisfied with their answers. So at last what he does, at last he decided to go to meet a hermit. He decided to go to, this is the page number 5. After that you can see page number 6, and today I'm going to start your page number 7. From here you will study from today. Okay, so don't be confused, you will study from here today. And I was telling you that in this chapter, the when he reached at the hut of the hermit, because when he was unable to find the answer, so at last you can say he decided to go to meet a hermit. And what happens over there, when he goes to meet a hermit, you can say he disguised himself, because he wears, you can say, ऑर्डिनरी क्लोथ्स. तो अपने आप को वह क्या करता है, डिस्गाइज कर लेता है, यानी अपने रूप को चेंज कर लेता है, सो दैट the hermit cannot recognize him, because he was already king. And you know about that hermit, that he never meet to the, you can say, rich persons, he always help and meet to the poor. So the king disguised himself, and after that when he reached there, he finds that he was busy in the field, he was digging the field. And when king reached there, he very first asked those questions that he has in his mind, and after that he want to help him also. And after that we will proceed the story from here, and we will understand the complete story here. Okay, so let's come, and you will see the next passage, next paragraph. Okay, from here I will tell you, this is the next paragraph. And you, as you can see also, that this paragraph I will teach you. After he had dug 2 rows, the emperor, because I have told you that he was digging also, because he want to help that hermit. So he take the spade, यानी वह फावड़े को ले लेता है, and after that he started digging. After he had dug 2 rows, the emperor stopped and turned to the hermit and repeated his 3 questions. So after that what happens? The hermit still did not answer, but instead stood and pointed to the spade and said, "Why don't you rest now? I can take over again." But the emperor continued to dig. 1 hour passed, then 2. Finally, the sun began to set behind the mountain. So after that what happens? After he had dug 2 rows, जब वह 2 रो को, यानी 2 रो को कंटिन्यू जब वह डग कर लेता है, खुदाई कर लेता है, ओके, द एम्परर स्टॉप्ड. तो एम्परर क्या होता है? स्टॉप्ड हो जाता है, यानी किंग एक बार फिर से अपने आप को रोकता है, रोक लिया है. एंड टर्न टू द hermit, and once again he want to repeat those questions, because when he first time asked that questions to that hermit, he don't reply. You can say hermit is not going to reply that question. So once again he asked to the hermit and repeated his 3 questions. The hermit still did not answer, and when he once again repeated those questions, hermit was quite silent once again. He was unable, you can say, he was not giving any answer to him, but instead stood and pointed to the spade and said. And after that what happens? And but instead stood and pointed to the spade and said. And he just instead stood, it means he just stood and pointed to the spade. उसके फावड़े की तरफ, स्पेड की तरफ पॉइंट करके उन्होंने कहा,
वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, अब आप आराम क्यों नहीं कर लेते हो, वाई डोंट यू रेस्ट नाउ, अब आप आराम क्यों नहीं कर लेते हो, यानी अब आपको आराम कर लेना चाहिए, बिकॉज यू आर सो टायर्ड, आई कैन टेक ओवर अगेन, इट मीन्स वी कैन once again we can take some rest and after that we can continue our, this is not important that we do our work right now here continuously. So but the emperor continued to do and to dug and he don't stop, because when the hermit says him to take rest he don't stop his work, he was continuously digging the field. 1 hour passed and in this way 1 hour passed, okay, then 2 and then 2 hours passed. Finally the sun began to set behind the mountains and you can say when he has digged the field continuously 2 hours, in this way it was evening time came. Finally the sun began to set means अब sunset होने जा रहा था, it means you can say it was the time of evening. Behind the mountain sun was going to set. Now the emperor put down the spade and then what he does, he put down the spade and said to the hermit, वह अपने spade को अपने फावड़े को रख देता है और हर्मिट से कहता है, व्हाट ही सेज टू द हर्मिट, आई केम हियर टू आस्क, आई केम हियर टू आस्क, you can see from here what he is going to say, I came here to ask if you could answer my 3 questions, but if you can't give me any answer, please let me know so that I can get on my way home. So what is he saying? He is saying that, you can say from here, see here in this paragraph that he is saying that mountains, the emperor put down the spade and said to the hermit, I came here to ask here, I came here to ask you could answer my 3 questions, यानी वो बता रहा है कि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए ताकि आप मेरे उन 3 प्रश्नों को रिप्लाई कर सके, बट इफ़ यू आर अनेबल टू आंसर, अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, अगर आप अनेबल हो, एंड यू कैन से इफ़ यू डोंट नो द आंसर प्लीज़ लेट मी नो, तो आप मुझे बता दीजिए, सो दैट आई कैन गेट ऑन माई वे होम, ताकि मैं अपने घर जा सकूं, ओके, आई कैन गेट ऑन माई होम मीन्स यू कैन से he is saying that if you will tell me that if you are not able to answer my questions, I can go from here, I will go from here because only I came here to know the answers of the question, क्योंकि मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन प्रश्नों का आंसर मुझे जानना है, ओके. आफ्टर दैट वी विल रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. Next paragraph from here, the hermit lifted his head and said, asked the emperor. Once again, hermit lifted his head, वह अपने सर को उठाता है, and asked the emperor, और उस emperor से पूछता है, do you hear someone running over there? The emperor turned his head. वह पूछता है कि do you hear someone running, कि आपको कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, do you hear someone running over there, कि वहाँ पे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, क्या उसके दौड़ने की या उसके दौड़ने से जो हाँफने की आवाज़ हो रही है, पैंटिंग की जो आवाज़ हो रही है, आर यू लिसनिंग दैट साउंड. द एम्परर टर्न्ड हिज हेड एंड एट दिस द एम्परर टर्न्ड हिज हेड, वह अपने सर को क्या करता है, टर्न करता है, ट्राई टू सी दैट इज रियली एनीबडी कमिंग ओवर देयर, ओके. आफ्टर दैट नेक्स्ट पैराग्राफ, दे बोथ सा अ मैन, you can see here, they both saw a man, so both saw to whom, to a man, they were seeing, you can say, a man who was coming over there from here. They both saw a man with a long white beard emerged from the woods. He ran wildly, pressing his hands against a bloody wound in his stomach. The man ran towards the emperor before falling unconscious to the ground, where he lay groaning, opening the man's clothing. The emperor and hermit saw that the man had received a deep gas. What is gas over here? Gas means you can say wound, घाव, okay.
द एम्परर क्लीन्ड द वुंड थॉरली, और उस घाव को लोग, सो लिसन वंस अगेन आई एम टेलिंग फ्रॉम हियर, दे बोथ सा अ मैन विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। जब हर्मिट ने कहा कि क्या आपको किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, दे बोथ सा अ मैन, तो दोनों लोग ने, हर्मिट ने और किंग ने भी उस तरफ देखना चाहा। जब उधर देखा तो उन्होंने क्या पाया, दे फाइंड दैट अ वाइट बियर्ड मैन इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स, यानी जंगल की तरफ से कोई भागते हुए उनकी हट की तरफ आ रहा था और उसकी बड़ी बड़ी वाइट दाढ़ियाँ थीं। दे बोथ सा अ मैन विद अ वाइट बियर्ड, उन्होंने एक आदमी को देखा, दैट हैव वाइट बियर्ड emerged from the woods, and he was emerging, you can say he was coming towards the wood sides from the jungle side, and he was coming towards the hut of that hermit. He ran wildly, और वह काफ़ी भयभीत होकर दौड़ रहा था, pressing his hands against a bloody wound in his stomach, और अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ था क्योंकि उसके पेट में क्या हो गया था, wound हो गया था। wound means what? You can say wound means घाव, okay, in his stomach. The man ran towards the emperor before falling unconscious to the ground. The man ran towards the emperor, वह उसी राजा की तरफ, किंग की तरफ आ रहा था, and he do not reach over there, he does not reach over there, before reaching that place he unconsciously fallen on the ground, मतलब वह अचेत होकर क्या होता है, उस कहने का मतलब उसको चक्कर आ जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है और किसी ग्राउंड पर वह गिर जाता है, फॉलिंग अनकॉन्शियस टू द ग्राउंड वेयर ही ले ग्रोनिंग, और वह लेट जाता है पूरी तरह से। और ग्रोनिंग मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं आप कि वह मतलब ग्रोनिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, कराह रहा था, ओके। ओपनिंग द मैन्स क्लोथिंग, और जब उसके मैन के क्लोथ को उतारा गया, ओपनिंग खोला गया, ओपन किया गया, ओपनिंग द मैन्स क्लोथिंग द एम्परर एंड हर्मिट सा दैट द मैन हैड रिसीव्ड अ डीप गास। तो जब उसके कपड़े को ओपन किया गया, आफ्टर दैट दे फाइंड आउट दैट, दे मीन्स ओवर हियर hermit and the king, they find out that he was deeply wounded, he has, you can say, deep wound in his stomach। तब उनको पता चला कि उसके पेट में काफ़ी गहरा घाव हो गया है। द एम्परर क्लीन द wound thoroughly, और राजा ने क्या किया, उसके घाव को साफ किया, एंड देन यूज्ड हिज ओन शर्ट टू बैंडेज इट, और उन्होंने अपने शर्ट को यूज़ किया सो दैट दे कैन बाइंड द wound ऑफ दैट ऑर्डिनरी मैन, ओके। बट द ब्लड कम्प्लीटली सॉक्ड इट विद इन मिनट्स, लेकिन इतना तेज़ी से खून बह रहा था कि लगभग 1 मिनट में ही वह जो शर्ट उन्होंने बांधा था वह पूरी तरह से सॉक्ड हो गया, पूरी तरह से ब्लड से गीला हो गया, ओके। ही रेज्ड द शर्ट, आफ्टर दैट व्हाट दे वर डूइंग ओवर देयर, लिसन, he rinsed the shirt out and bandaged the wound a second time. It means once again they you can say tied that wound with another clothes that time, and they continued to do so, और इस तरह से उन्होंने कई बार उनके घाव को ऐसे ही बांधा, so until the फ्लो ऑफ ब्लड हैड स्टॉप, और उन्होंने तब तक ऐसा किया जब तक कि ब्लड बहना बंद नहीं हुआ, ओके। It means you can understand over here that when that man came, king was, you can say, never becomes, you can say, he was never think that he was king, and so he will not do such type of work. It means he was very, you can say, kind hearted, and when he find that the person who was, you can say, deeply wounded, deeply gassed, so king himself helped him, king himself served him, okay. This is the important thing for the king. And after that, next paragraph, from here you will see, at last the wounded man regained unconsciousness and soaked and asked something to drink, and at last what happens, you can say, at last that man, you can say, become कॉशसनेस, यानी वह सचेत हो गया, अब वह चक्कर खा के जो गिर गया था उसको एक तरह से होश आ गया था। एट लास्ट द wounded मैन रिगेन्ड कॉन्शियसनेस एंड ऑल समथिंग टू ड्रिंक, और वह कुछ, क्योंकि एट दैट टाइम यू कैन से ही वॉज थर्स्टी, सो वेरी फर्स्ट व्हेन ही बिकम कॉशस, जब उसको सचेत होता है, जब उसको एक तरह से
होश आता है तो वह कुछ पीने के लिए मांगता है, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज थर्स्टी। द एम्परर रैन डाउन टू द स्ट्रीम एंड ब्रॉट बैक अ जग ऑफ फ्रेश वाटर। Then after that, what does emperor do over there? Over here you can say emperor ran down and he goes to take fresh water towards the stream of the you can say river. Meanwhile the sun had disappeared. उस समय तक sun disappeared हो गया था, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे अंधेरा हो गया था। had disappeared and the night air had began to turn cold, क्योंकि आपको पता है कि जब सन डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो रात की जो हवाएं होती हैं वो थोड़ी ठंड हो जाती हैं। इन दिस वे ओवर हियर राइटर इज आल्सो रिटन इन दिस पैराग्राफ दैट व्हेन द सन डिसअपियर्ड एट दैट टाइम नाइट एयर, जो रात को जो हवा चल रही थी, नाइट एयर हैड बिगन टू टर्न कोल्ड, वह भी अब थोड़ी ठंडी हो चली थी। सो द हर्मिट with the help of emperor carried the wounded man into the hut। इसलिए उस हर्मिट और किंग दोनों लोग मिलकर उस wounded मैन को अपने हट के अंदर ला लेते हैं, क्योंकि उसको ठंड महसूस हो रही थी। where they laid down on the hermit's bed, और फिर क्या हुआ, where they laid down यानी उसको वहीं हर्मिट के बेड पर सुला दिया जाता है। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइटली, उसने अपने आँखों को बंद किया और आराम से सो जाता है। द एम्परर वॉज टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन एंड डिगिंग द गार्डन। आपको पता है कि इसके पहले जो एम्परर थे उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया था, उन्होंने भी डिगिंग की थी फील्ड को। एंड यू नो ही इज़ एम्परर सो ही हैज़ नॉट हैवी टू डू too hard work, and this was the reason he also become tired. So hermit's bed, the man closed his eyes and lay quietly. The emperor was tired from a long day, because he already tired from a long day of climbing mountains। पहली बात तो पर्वत पर चढ़ाई किए थे, इसलिए वह थक गए थे। ओके, एंड नेक्स्ट after that you can say he was digging the field over there also, so this was the reason he was also totally tired। okay, leaning against the doorway, और उसी डोरवे दरवाजे के पास में क्या होता है, वो भी दीवार से एक तरह से दीवार को टच करके पूरी तरह से लेट जाते हैं। लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे ही फेल asleep, वह पूरी तरह से स्लिप कर जाते हैं, सो जाते हैं। देन ही रोज, व्हेन ही रोज द सन हैड ऑलरेडी राइजन, और सुबह जब उनकी नींद खुलती है, एट दैट टाइम यू कैन से इट वाज मॉर्निंग टाइम एंड सन ऑलरेडी हैज केम आउट। ओके, यानी सूरज निकल आया था और सवेरा हो गया था। लीनिंग अगेंस्ट द डोरवे ही फेल एस्लीप व्हेन ही रोज, और जब वह उठते हैं, द सन हैड ऑलरेडी राइजन ओवर द माउंटेन्स, तो सूरज उग आया था। बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज एंड व्हाट डज ही केम हियर फॉर, और इसके पहले कि उनको याद आता कि वे कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बिफोर ही कुड रिमेंबर, कि आप वो याद कर पाते कि क्या कहाँ पर थे। वेयर ही वॉज एंड व्हाट ही हैड केम देयर फॉर, और यहाँ पे किस लिए आए थे। ही लुक्ड ओवर टू द बेड, सो व्हाट हैपन्स ओवर देयर। 1 minute, I want to tell you that which paragraph I'm going to teach you. From here you can say, so what happens after that, saw the wounded man also, it means where you can say where he was and what he had come here for, वे यहाँ कहाँ पे थे और किस लिए आए थे। he looked over and to the bed and saw to the wounded man, और इसके बाद उन्होंने क्या, he looked over to the bed, उसकी बेड की तरफ देखा, and saw the wounded man also looking around him in confusion, और वह व्यक्ति भी किंग की तरफ देख रहा था कंफ्यूज होकर, कंफ्यूजन में। when he saw the emperor, और जब उसने emperor को देखा, he stared at him intently and then said in a faint whisper, please forgive me। so what happens over there, it means after that when he recognized the king, so what he does very first, he saw the emperor, he stared at him, वह जब राजा को देखा, किंग को देखा, तो वह उनको घूर कर देख रहा था। क्या कर रहा था, घूर कर उनकी तरफ देख रहा था। in confusion, and he was very confused to seeing the king। when he saw the emperor he stared at him, तो वह उनकी तरफ देख रहा था intently and then said in a faint whisper, और क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वह बहुत धीमे स्वर में कहता है कि प्लीज़ मुझे
माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी. ओके. After that what happens? But you can say this is the last paragraph. Here you will understand that what he does and what he tells to the king also. यानी वह क्या बताता है राजा से. But what have you don't done that I should forgive you? तो राजा ने पूछा कि आपने किया क्या है कि मैं आपको माफ़ करूं. Why I forgive you? What have you done for me? It means which kind of mistakes you have committed that we should forgive you. He should forgive. So, but what have you done that I should forgive you? The emperor asked, and in this way, emperor asked. So, what happens after that? You do not know me. आप मुझे नहीं जानते हो. Your Majesty, हे महाराज, आप मुझे नहीं जानते हो. But I know you. लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I was your sworn enemy. Sworn means you can say old enemy. I was your sworn enemy and I had oath to take revenge on you. और मैंने इस तरह का शपथ लिया था, इस तरह का प्रण किया था, वो किया था that I will take revenge on you, कि मैं आपसे क्या लूँगा, बदला लूँगा. For during the last war you killed माई ब्रदर, क्योंकि लास्ट वार में आपने मेरे भाई को क्या किया था, मार दिया था. ड्यूरिंग द लास्ट वार you killed my brother and seized my property, and you have captured my all the property. So this was the reason I want to take revenge on you. मैं आपसे बदला लेना चाहता था. And this is the reason I came here to kill you. ये बात वह wounded man king से बताता है. After that, I have completed your page here. So next page I will teach you in the next video. Thank you dear students for seeing this video.